Hello and welcome back to Shorthand Pro. I am John. I hope you all are fine. आज की इस लाइव क्लास में मैं आपको 3 डिक्टेशंस प्रोवाइड करूंगा। जो पहली डिक्टेशन है वो एक जनरल मैटर डिक्टेशन है 313 ऑफ वर्ड्स के 60 वर्ड्स पर मिनट उसकी स्पीड रहेगी, वो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है। और जो आज की दूसरी डिक्टेशन है वो एक मिक्स्ड मैटर डिक्टेशन है 353 ऑफ वर्ड्स, उसकी स्पीड रहेगी 70 वर्ड्स पर मिनट, वो एक जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए है। ठीक है। जो आज की लास्ट डिक्टेशन होगी, थर्ड वाली डिक्टेशन, वो लीगल मैटर डिक्टेशन है 405 ऑफ वर्ड्स के, उसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड्स पर मिनट, वो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए है। ठीक है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विजिट करके आप चैनल पे बहुत सारे वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। मीनवाइल अगर आप इन डिक्टेशंस का पीडीएफ चाहते हैं तो उनके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम लिंक आपको इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। If I am clearly audible to everyone, please let me know in comments so that we can straight away start our dictations. ठीक है। प्लीज मैं कमेंट्स में आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए अगर मैं ऑडिबल हूँ अच्छी तरीके से, तो प्लीज सो वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। ओके, तो तैयार रहिए। जो आज की डिक्टेशन पहली है जनरल मैटर डिक्टेशन है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसकी स्पीड रहेगी 60 वर्ड्स पर मिनट। प्लीज prepare yourself for this. Get yourself ready for the dictation. The dictation will start after 5 seconds. Start. The Great Depression was the most severe economic crisis of the 20th century. Stop. It began in the United States in 1929, following the sudden collapse of the stock market, and quickly spread across the world. Stop. Factories closed, banks failed, and millions of people lost their jobs, homes, and savings. Stop. The causes of the Great Depression were complex. Stop. In the years after the First World War, the American economy had grown rapidly, but much of this growth was built on credit and speculation. Stop. People borrowed heavily to invest in shares, believing prices would continue to rise. Stop. When confidence collapsed and the stock market crashed in October 1929, panic set in, and the entire financial system was shaken. Stop. The effects were devastating. Stop. In the United States, unemployment rose to more than 1/4 of the workforce. Stop. Families queued for food, farmers faced falling prices, and many were forced to leave
their land. Stop. The crisis did not remain limited to America, semicolon, Europe, comma, already weakened by war debts, comma, was also struck. Stop. Countries that depended on exports, comma, such as Germany, comma, suffered deeply, comma, while international trade declined sharply. Stop. Governments struggled to respond. Stop. At first, comma, many tried to cut spending, comma, which only made conditions worse. Stop. Later, comma, leaders introduced new policies to revive economies. Stop. In America, comma, President Franklin D. Roosevelt launched the New Deal, comma, a series of programs aimed at creating jobs, comma, supporting farmers and reforming the banking system. Stop. Although recovery was slow, comma, these measures restored hope and laid the groundwork for future stability. Stop. The Great Depression had lasting consequences. Stop. It showed the dangers of uncontrolled speculation, comma, highlighted the need for government regulation of the economy, comma, and changed political attitudes worldwide. Stop. In some countries, comma, the crisis led to extremism and prepared the ground for the rise of dictatorships. Stop. Above all, comma, the Great Depression remains a reminder of how fragile economies can be and how deeply economic hardship can affect ordinary lives. Stop. End of dictation. I'm sorry for my wrong pronunciation here. I have pronounced fragile as fragile. ठीक है, प्लीज इसको ठीक कर लेना अपनी तरीके से. ये दरअसल फ्रेजाइल है तो मैंने फ्रेगाइल पढ़ लिया है, आप इसको ठीक कर लेना. ठीक है. और एक वर्ड है यहाँ पे वर, WERE. मैं हमेशा इसको वर पढ़ता हूँ तो आप इसको ध्यान में रखा करें. इट्स नॉट वेयर, मैं इसको वर पढ़ता हूँ. ठीक है, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है. और दूसरा वर्ड है यहाँ पे DEBTS. ये डिबिट्स नहीं है, इट्स डेट्स. ठीक है, इसमें बी साइलेंट है. इन चीजों को आप खास ख्याल रखिएगा. आई होप डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी. अब आर यू राइट डाउन द सेकंड डिक्टेशन फॉर टुडे? You are ready to write down our second dictation, please mention in comments so that we can start straight away. दूसरी जो डिक्टेशन है एक साइंस डिक्टेशन है मिक्स्ड मैटर की. साइंस इसमें है, लीगल है, इसमें जनरल पॉइंट ऑफ व्यूज है, तो इसके लिए आप तैयार रहो. ठीक है. कोई टफ वर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा. जितने भी टफ वर्ड्स हैं आप उनके लिए आपको फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. ठीक है. सो प्लीज टेल मी इन कमेंट्स इफ यू आर रेडी टू राइट डाउन द सेकंड डिक्टेशन फॉर टुडे सो वी कैन स्टार्ट इट. Okay. Get yourself ready for the dictation. The dictation will start after 5 seconds. Start. The atom is the smallest unit of matter and forms the foundation of everything around us. Stop. At its center is a nucleus made of protons and neutrons, comma, while electrons move around it in energy levels. Stop. Protons are positively charged, comma, neutrons are
neutral, and electrons are negatively charged. Stop. The precise arrangement of these particles gives the atom stability. Stop. Different elements are distinguished by the number of protons in their nuclei, and the way electrons are arranged determines chemical behavior. Stop. Although tiny, atoms are fundamental to the universe, and understanding them has led to numerous scientific discoveries. Stop. Hard work is the key to success and personal growth. Stop. It requires perseverance, dedication, and discipline. Stop. People who achieve their goals do not rely on luck, semicolon. They consistently put in effort, even when challenges seem overwhelming. Stop. Hard work teaches patience, builds character, and develops skills that cannot be gained easily. Stop. Success is rarely instant, semicolon. It comes to those who are willing to endure difficulties and remain committed to their objectives. Stop. Whether in studies, career, or personal life, hard work brings satisfaction and confidence. Stop. Ultimately, it is effort, not talent alone, that determines achievement and long-term prosperity. Stop. Physics is the study of how the universe functions. Stop. It examines everything from the motion of planets to the strange behavior of subatomic particles. Stop. Newton's law described how objects move, while Einstein revealed that space and time are interlinked. Stop. Later, quantum mechanics uncovered astonishing phenomena at the atomic level. Stop. Physics also impacts daily life, electricity powers homes, telecommunications connect nations, and medical technology saves lives. Stop. Physics helps humans understand neutral laws and innovate responsibly. Stop. Law is the system of rules that maintains social order. Stop. It ensures fairness, protects rights, and promotes justice. Stop. The British legal system has evolved over centuries, combining common law, statutory rules, and constitutional principles. Stop. Courts resolve disputes, enforce laws, and uphold rights. Stop. Criminal law punishes offenses, civil law settles disagreements, and international law governs relations between nations. Stop. Law is dynamic, adjusting to social and technological change. Stop. Just as physics reveals the laws of nature, law establishes the rules for living together in civilization, encouraging responsibility, fairness, and harmony. Stop. End of dictation. आई होप डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी। टफ डिक्टेशन है, बहुत सारे वर्ड्स इसमें बहुत टफ हैं, तो आपको आदत रखना है इन टफ वर्ड्स डिक्टेशंस को लिखने का।
तो अगर किसी को ज्यादा टफ लगी है मेंशन इन कमेंट्स, एंड अगर किसी को इजी लगा है वो दैट टू मेंशन इन कमेंट्स, ठीक है। And if you are ready to write down the last dictation for today, please mention in comments that well. हाँ, it was extremely tough, ठीक है, क्योंकि no one knows आपके डिक्टेशन ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, टफ डिक्टेशन आते हैं, as you know that आजकल के जो डिक्टेशन आते हैं हमारे एग्जाम में बहुत टफ होते हैं, ठीक है, तो आपको टफ लिखने का आदत करना है, ठीक है। अगर आपको पहली बार यहाँ पे गलती हुई है ना डिक्टेशन में, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू रिपीटली प्रैक्टिस दिस डिक्टेशन, ठीक है। जो भी आपको टफ लगी हमारी डिक्टेशन, इनको रिपीटेडली बाद में प्रैक्टिस करना, अभी नहीं, फिलहाल अभी नया लिखो, उसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाएगा बाद में फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और जिस जिस वर्ड की आपको आउटलाइनिंग चाहिएगा आप मुझे, मैं यहाँ पे 5 मिनट दे दूंगा आपको, डिक्टेशन के खत्म होने के बाद आप मुझे पूछना वर्ड्स, मैं आपको आउटलाइन बना के दूंगा, ठीक है। कोई भी सवाल होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो मीनवाइल, आर यू रेडी टू राइट डाउन द लास्ट डिक्टेशन फॉर टुडे? जो हमारी लास्ट डिक्टेशन है ये एक लीगल मैटर डिक्टेशन है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो अगर आप तैयार हैं तो प्लीज मेंशन इन कमेंट्स। ठीक है, ये डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे होगा, ठीक है, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डिक्टेशन। दिस डिक्टेशन विल बी स्टार्टेड आफ्टर 5 seconds. Okay, start. Aggrieved by his detention ordered wide district magistrate Anantnag's order, petitioner has filed this petition through his father, to seek quashing of the detention order, besides seeking compensation of rupees 20 lakhs. Stop. The detainee was arrested by security forces in FIR number 11/6 registered under section 7/25 Arms Act. Stop. He is reported to have attended the trial before the criminal court. Stop. He, later, as desired by SHO police station Kokarnag, reported to him from where he is alleged to have been shifted to Central Jail, Court Balwal, Jammu, in execution of order. Stop. The detainee questions his detention inter alia on the ground that the detention order was the result of total non-application of mind of the detaining authority, which had failed to supply the material, relied upon by it in directing the detention. Stop. The grounds of detention were vague, indefinite, and non-existent, besides being irrelevant on the basis whereof no effective representation could have been contemplated by a person of ordinary prudence. Stop. Learned counsel urged that the respondents had not explained as to why the detention order had remained unexecuted despite detainees being available with the respondents, and this non-explanation, besides demonstrating the non-application of mind of the detaining authority in issuing the detention order, would render the detention unsustainable. Stop. Delay in the execution of the detention order may not ipso facto vitiate the detention order, is a position, well settled in law. Stop. I am therefore, left with no other option except to conclude, in the absence of any explanation of the respondents as to why detention order
issued in February 2006 was not executed till August 2006, when the detainee was all along available with the respondents, that the detention order of District Magistrate Anantnag needs to be set aside and cautioned. Stop. That apart, a bare perusal of the grounds of detention demonstrates that the district magistrate Anantnag had proceeded on the premise that the detainee was in custody when he had issued the detention order. Stop. It appears that district magistrate had passed a routine detention order with sanct regard for the liberty of the detainee and the provisions of Article 21 of the Constitution of India. Stop. For all what has been said above, I find petitioners' detention to be unsustainable in law. Stop. Caution order, I allow this petition and direct the release of petitioner from custody forthwith, if not required in any other case for infraction of penal laws in force in the state. Stop. End of dictation. आई होप डिक्टेशन आपको अच्छी लगी होगी. बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेशन है आज के. रिपीटेडली प्रैक्टिस करना. जिसको भी ज्यादा गलती लग रही है हमने की है तो उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है. ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, यू हैव 5 मिनट्स टू आस्क मी. ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, या किसी की आउटलाइन बनानी नहीं आती है वो भी पूछ लीजिए. क्वाकरनाग. ठीक है. इट्स अ नेमिंग वर्ड, सो सी हाउ यू हैव टू राइट इट. क्वाकरनाग सिंपल है. देखो कैसे. KOKERNAG. क्वाकरनाग. देखो सिंपल. इसमें क्या करेंगे आप, ऑन द लाइन लिखेंगे सारा, डबल करके फिर NG, N या इस तरह J लिखते हैं क्वाकरनाग, या इस तरह अगर नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, क्वाकर NG को इस तरह फॉलो करेंगे ना, डबलिंग प्रिंसिपल करेंगे. ठीक है. इसमें O डालेंगे, नीचे अपने 2 पैरेलल लाइंस डालने हैं. ठीक है. ये क्वाकरनाग ऐसे लिख, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है. ELECTRONS. इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे लिखना है. इलेक्ट्रॉन्स में आपने L डाउनवर्ड का इस्तेमाल करना है. ठीक है. LKTRONS. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स. वॉइस लो आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? Am I audible? Wait. क्या आप आवाज आ रही है? आवाज मेरी आ रही है अच्छे से? अच्छे से आ रही है मेरी आवाज? ठीक है. हाँ, यहाँ पे लिखने के टाइम ये आवाज थोड़ी सी कम होती है. अब मैंने इसको ठीक किया है. होप आपको अच्छे से आ रही होगी मेरी आवाज अब. हाँ, यहाँ पे जैसा आपने पूछा है, कैन वी राइट DM अनंतनाग फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग. नहीं नहीं नहीं, जो हाँ आप इस तरह शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर टू राइट द फुल एज हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिक्टेशन. ट्रांसक्रिप्शन के टाइम आपको वही लिखना है. ठीक है. अपना कुछ नहीं लिखना उसमें. डिक्टेशन में आप शॉर्ट एंड डिक्टेशन में आप ये शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वहां पे फुल लिखना है. अगर वहां पे डिक्टेशन आपको फुल लिखा है तो अपने फुल लिखना है. ठीक है. शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज इट्स कंसिडर्ड एज एन एरर. इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? क्या कोई और वर्ड है जिसकी आपको लाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? एंड आपको डिक्टेशन कैसी लगी वो बता दीजिए. अनंतनाग. ठीक है. अनंतनाग में आपको बताऊं कैसे लिखना है.
सीखे कैसे लिखना है अनंतनाग। अनंतनाग में आपने पहला एंटी को फॉलो करना है, ठीक है। पहले एंटी को फॉलो करके फिर एनजी को एक साथ लिखना है, ठीक है। अनंतनाग, ठीक है। इसमें भी आपने 2 पैरेलल लाइंस डालनी नीचे, अनंतनाग। होप आपको समझ आ गया होगा। Is there anything else I can do for you? क्या कोई और वर्ड है जिसकी आउटलाइन आपको बनानी नहीं आती है? अनंतनाग में एनटी को फॉलो करके फिर एनजी को एक साथ लिखना है, बट मेक श्योर टू पुट 2 पैरेलल लाइंस बिफोर इट, ठीक है। क्योंकि जो भी नेमिंग वर्ड होगा उसके नीचे आपने 2 पैरेलल लाइंस प्लेस करने हैं, ठीक। स्पेकुलेशन, ठीक है, नजर रखेंगे स्पेकुलेशन कैसे लिखते हैं। SPECULATION, स्पेकुलेशन, ठीक है। स्पेकुलेशन में सिंपल है, देखो SP लिखा ऑन द लाइन, एस सर्कल P K, फिर रिलेशन आपने इस तरह लिखना है, स्पेकुलेशन। यहाँ पे आप चाहो तो U प्लेस कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप पढ़ सकते हैं फिर U प्लेस करने की जरूरत नहीं है। SPKLN, कीवर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कीवर्ड भी आपको सिखाएंगे कैसे लिखना है। QUEUED, कीवर्ड देखो किस तरह लिखना है। कीवर्ड में आपने एक फुल होता है, दूसरा मैं फिर आपको बताऊंगा एडवांस कैसे लिखना है। कीवर्ड में आपने के लिखा अबोव द लाइन, फिर डी को आपने अक्रॉस द लाइन लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपने यू प्लेस करना है। एक तो ये होता है कीवर्ड, दूसरा आप इस तरह लिख सकते हो हार्वर्ड फॉर्म, देखो कैसे, के लिखा ऑन द लाइन, फिर यू डालना है, बट इसके नीचे आपने लाइन डालनी है, कीवर्ड। इस तरह भी हार्वर्ड फॉर्म भी इस तरह लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इसका बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजियर। KU फिर डैश कीवर्ड, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे इसको। Is there anything else, any other word you want me to write down the outline for that? And if there's any other question you want me to ask, so please ask. और आज की डिक्टेशंस आपको कैसी लगी वो भी बता दीजिए कमेंट्स में आफ्टर वीडियोस अपलोडेड। यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स भी आपको बता देंगे। ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे मैं यूनिवर्स, UNIVERSE, यूनिवर्स। देखिए इस तरह U बनाना है, य VR और S, यूनिवर्स, ठीक है। इसमें N जो पहला वाला N आता है उसको स्किप करना होता है, ठीक है। इसमें U डालना, य फिर वर्स बनाना है, यूनिवर्स, ठीक है। अगर N लिखेंगे तो वो बड़ा बन जाएगा, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा यहाँ पे। उसमें क्या करना है, अक्रॉस लाइन N और VR, यूनिवर्स, इस तरह भी यूनिवर्स लिख सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू यूज दिस वाला, ठीक है। हाँ, थैंक यू शर्मा जी। She said good dictations, but second one is tough. हाँ टफ थे, बट प्लीज इन चीजों को टफ लिखने की आदत कर लेना है आपको सबको, क्योंकि आपको टफ भी आ सकता है, ठीक है, मैटर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप दिस क्लास इज फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन and make sure to turn on the notifications bell. Please join our Telegram. The link will be in this description of this live session. Thank you so much for joining our live class. I wish you all the very best and a great success ahead.